Annual Science Exhibition. Myself, Menza Shafiq, and I'm a 10th reader of Light School. So I am from the vlogging team. So basically, as we all are well aware that according to the new education policy, we are supposed to get ourselves engaged in the extracurricular activities. I'm really thankful that our school organized a science exhibition. So आइए guys, हम आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसी तैयारियां चल रही है साइंस एग्जीबिशन के लिए। काम आज साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम हो रहा है। आज यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इवन कि जिनका हिडन टैलेंट है वो भी बाहर आ रहा है। एज अ साइंस टीचर मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकता। Today we are having a science exhibition here. It's actually a 2-day exhibition in which different students have prepared different models. The aim of this science exhibition is just to inculcate and develop a scientific attitude and practicality among the minds of the students. So we are happy. All the students are participating here. They are all happy. Thank you very much. और इससे क्या होगा, इससे इसके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगे। ठीक है, ये साइंटिफिक आइडियाज़ इनको बहुत सारी इनोवेटिव आइडिया आएंगे। इससे क्या होगा, इससे इनका जो कंसेप्ट वो सारा क्लियर होगा। वो 10th क्लास में पढ़ रही है। तो आप बताइए कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारे जो साइंस एग्जीबिशन लाइफ स्कूल में सबसे पहला फंक्शन होने वाला है। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपने क्या बनाया है वैसे आप हमारे लिए? I think this science exhibition is an opportunity for the students to ताकि वो अपना टैलेंट बाहर निकाल सके और दिखा सके कि उनमें कितना टैलेंट है। So basically मेरे दो मॉडल्स हैं, I'm very much excited कि मैं उनको कब रिप्रेजेंट करूँ उनके सामने, और मेरा मतलब I'm waiting for them कि मैं उनको कब अपना मॉडल बनाऊँ। और बाकी लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। I'm Soleha Nazir from 10th standard. I'm very much thankful to our school that they organized the science exhibition. It helped us to enhance our minds, and it helped us in many ways. We are thankful to our school. Education is not the learning of facts but training of the mind to think. हमारे स्कूल ने जो ये ऑर्गेनाइज किया ये एग्जीबिशन, इससे हमारे माइंड्स ट्रेन हुए, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ फोकस नहीं एक चीज़ पे कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। हम अपने माइंड्स को डेवलप कर सकते हैं बाय शोइंग अवर टैलेंट। हमने बहुत सारे मॉडल्स बनाए जो हमें आज शो करने हैं, जिनके बारे में हमें इन्फो भी मिली। थैंक यू। So right now we are with one of our Lifian, that is Shahnuman from grade 10th. तो हम इसी से बात करना चाहेंगे कि इसने क्या बनाया है ये साइंस एग्जीबिशन के लिए। तो व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ दिस एंड व्हाट इज दिस? Hello, my name is Shahnuman of grade 10th B, and today I have made this model. इसका नाम जो है that's river cleaner boat. Basically, it works like a cleaner boat. We have the different types of boats like जिसमें हम मतलब सफ़र करते हैं and all that. But this is the different boat from the all others because it cleans the जो भी dust जो भी मतलब हम देखते हैं कि जो पॉलीथीन है वो इसमें वाटर में नहीं जाता है, वो उसी पे फ्लोट करता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हमने एक जो है वाटर क्लीनर बोट बनाई है। एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, इसमें कन्वेयर बेल्ट लगा है, और जो कन्वेयर बेल्ट है जिसकी बैटरी की कंडीशन की जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है राउंड करने लगता है, और जो भी मटेरियल इस पे वाटर में जो भी होता है तो वो इस पे आता है और एक कंटेनर में जमा हो जाता है। There is a nervous system, so Usma, my friend. First of all, Assalamu alaikum. And
This is the nervous system. So first, what are the nerves? Nerves are the cables that transmit electric signals from the brain to the rest of the body, and also it acts as a communication between the various parts of the body. Nerves are divided into two parts. The main motto of this is pollination and fertilization. How fertilization is occur in a flower. So that you have represented on this It's a chart. Anything new, different from previous year chart or something which you have? it's all new. Thank you. ये मेरा डायहाइड्रेट स्टाफ मॉडल है। ये बेसिकली ग्रेगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट है जो उसने कैरी आउट किया था। तो उसने क्या किया था, ये बेसिकली डायहाइड्रेट पहले हमें हाइड्रेट समझता है। इसमें अलील्स होते हैं। अलील्स क्या होते हैं? वैरिएंट्स होती है जीन्स के, और जीन क्या होता है? कि कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का। तो इसमें ये क्या होता है, हाइब्रिड वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें डिफरेंट अलील्स पाए जाते हैं, और डायहाइब्रिड में 2 ट्रेट्स लेते हैं, इसलिए इसमें हमारे 2 गैमेट्स आते हैं। गैमेट्स यानी सेक्स है। तो इसमें क्या किया है, इसमें इनके सेल्फिंग जो 2 प्लांट्स लिए हैं, पी प्लांट्स इनने लिए थे। पी प्लांट्स इसलिए लिए थे क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट रहता है, इस वजह से इसे ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनने पी प्लांट की सेल्फिंग की थी, ये परेंट्स पे है, इसमें हमारी जो मेटिंग है वो ईजी बन जाती है। Now, yes, and the thing is that it's also a law which he has calculated after this experiment, which is known as law of independent assortment, which means that जो कोई भी गैमेट है वो फ्री है कि वो किसी और के साथ जो है वो गैमेट बना सके यहाँ पे। Yes, phenotype is a physical character जो एक प्लांट दिखाता है जब उसकी सेल्फिंग की जाती है। Name of the device from here. It's an automatic motor system. Automatic water flow system. Yes. What is the function of it? Yes. When the motor, actually, it's always plugged in. It will fill the tank, but when the raindrop sensor senses the water, it will stop working. Like this. Yes. So after Just prepared a little model of a vacuum cleaner. So the main idea of my model is that it's a portable. I can carry it like if I want to go somewhere, I can carry it with myself and I can clean the dust. And it's a little model of a vacuum cleaner through which I can it just sucks the air, and in which there are the small particles, and ये suck करता है इसको या फिर अंदर। Yes, sir. now you have to put the Model of space shuttle. What actually space shuttle is? It's a retired, reusable, partially lower Earth orbital spacecraft system, which was started by NASA in 1981 by launching a space shuttle Columbia. Columbia was the first space shuttle which was launched on 12 April 1981 by NASA at Kennedy Space Center, Florida, and it was governed by Yongchan. Demo you can show. Everywhere it creates very much pollution. So for that purpose, I have made this. From here it can suck smoke, and from here it gives out. So sometimes we just it's very hot, so we can just put it like this, and from here when we just fan is on, it can give air from here. So this is my project about exhaust fan and air cooler. What about dust? Can you control dust from it? Chimney is like chimney idea, you know? Yes, sir. For that we needed a strong propeller to do that. But I'm just telling you. So it consists of a proximity sensor, transistor, and a water pump. When we put anything behind the sensor, the water pump automatically comes in action, and the water it pumps the water upside and comes through this pipe. It has a refill also. What is a transistor? Sir, it's a semiconductor which regulates the flow of current and voltage. How many? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर Pair of kidneys, pair of urethra, and kidney. First of all, if we talk about kidney is a muscular organ which is bean-shaped. Its length is 12 centimeters, its thickness is 6 centimeters, and its every weight is 150 grams. Yes, sir, the deposition of calcium
Yeah, it's been very kind. Sir, if we feel like we are we have urged to use we should not control it. This is going in straight line, ना? Yes. हाँ. अब इसका फिर हमारी स्पेस आप दिखा बेटा आप पालो वही मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन में हो नहीं चल रहा है तो ला फिजिक्स करेगा ना थैंक यू Air cooler. We have used a 9-volt battery, a DC switch. so how a will DC how motor. will air cool down Air will cool down. That we have actually is it used water cooler or No, it's actually ice cube. We have used ice cubes in it, but as we don't have ice cubes here, then air will get cool yeah, it will enhance the cooling effect by evaporative cooling principle. This is a windmill. Yes. But you think it will work in here in Kashmir so it will work. Coastal areas winds here where the wind speed is more. Where winds are more. यहाँ पे कहीं चांस and it pumps the water from there and through the water from ये आपने एमसी लगाया है ना वो खुद से डब्बा बनाया and you it's the water supply. वाटर प्लांट्स छोटे पार्क्स में Yes, sir. आपका विचार क्या है These are rotating these speeds. The LED bulbs glow. ओके The speed of wind must be 20 km per hour. जो यहाँ पे नहीं होती ना वेरी गुड तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं ना वी कैन मेक इट Yes, sir. Yes, sir. जो आपका एग्जॉस्ट आता है तो वहाँ से पानी गिरेगा Yes, sir. आता है ना आप Yes, रेन sir. से वो पानी भी हम यूज कर सकते हैं Yes, sir. एंड वी We कैन can use that. Yes, sir. इतना भी है ठीक है कोई नयापन है इसमें